बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फयाज़ अहमद ख़ान और आज की वीडियो में हम प्रिक्यूरमेंट प्लानिंग और एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्रिक्यूरमेंट प्लानिंग को पब्लिक प्रिक्यूरमेंट रूल्स 2004 के रूल नंबर 8 में डिस्कस किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम प्रिक्यूरिंग एजेंसीज मतलब मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स जिन पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो प्रिक्यूरमेंट प्लानिंग करें, जिसमें तमाम प्रोपोज्ड प्रिक्यूरमेंट्स को डिटेल के साथ बयान किया जाए और अपने रिक्वायरमेंट्स को रियलिस्टिकली डिटरमाइन करें और उनको मीट करने के लिए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उसके लिए एक प्लान तरतीब दें। तो इस रूल में कहा गया है, विद इन 1 year ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स all procuring agencies shall devise a mechanism for planning in detail for all proposed procurements with the object of realistically determining the requirements of the procuring agency within its available resources, delivery time or completion date and benefits that are likely to accrue to the procuring agency in future. प्रिक्यूरमेंट प्लानिंग तो हो गई। अब आगे के प्रोसेस के लिए रूल नंबर 9 में इसमें कुछ लिमिटेशंस इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जब एक दफ़ा आप प्रिक्यूरमेंट प्लान बना लें तो फिर उसको अनाउंस करें और उसके बाद उसी के मुताबिक आगे प्रोसीड करें और वो जो प्रोपोज्ड प्रिक्यूरमेंट्स हैं उसको स्प्लिट ना करें, रीग्रुपिंग ना करें उसकी। और ये जो अनाउंसमेंट है ये अथॉरिटी के वेबसाइट पे भी लाजिम है और अपने वेबसाइट अगर किसी प्रिक्यूरिंग एजेंसी का है तो वहां पे भी इसको अनाउंस करें। तो इस रूल में कहा गया है, सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, अ प्रिक्यूरिंग एजेंसी शैल अनाउंस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर all proposed procurements for each financial year and shall proceed accordingly without any splitting or regrouping of the procurements so planned. The annual requirements thus determined would be advertised in advance on the authority's website as well as on the website of the procuring agency in case the procuring agency has its own website. किसी भी किस्म के प्रिक्यूरमेंट को एडवर्टाइज करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ज़रूरी है। इसको रूल नंबर 11 में बयान किया गया है, जिसमें कहा गया है, ऑल प्रिक्यूरिंग एजेंसीज शैल प्रोवाइड क्लियर ऑथराइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स for different categories of procurement and shall only initiate procurements once approval of the competent authorities concerned has been accorded. Next है एडवर्टीजमेंट के हवाले से प्रिक्यूरमेंट एडवर्टीजमेंट्स। रूल नंबर 12 में मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को डिस्कस किया गया है, जिसमें पहले ये कहा गया है कि 5 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक की जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो अथॉरिटी के वेबसाइट पे होना लाजिम है और इसको प्रिंट मीडिया में अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। 30 लाख रुपए से ज्यादा की एडवर्टीजमेंट को अथॉरिटी के वेबसाइट पे होना भी लाजिम है और प्रिंट मीडिया में भी आना लाजिम है, जिसके लिए ज़रूरी है कि एक एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में हो और इंग्लिश न्यूज़पेपर में हो और एक कम से कम एक जो है वो उर्दू डेली में हो। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर प्रिक्यूरिंग एजेंसी के पास अपनी वेबसाइट मौजूद है तो उस पे भी देना चाहिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से दी गई हैं कि अगर कोई प्रिक्यूरिंग एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं, देन दे शैल इंश्योर द इंफॉर्मेशन
posted on the website is complete for the purposes for which it has been posted, and such information shall remain available on the website until the closing date for the submission of bids. رول نمبر 13 میں رسپانس ٹائم کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروکیورنگ ایجنسی خود سے ڈیسائیڈ کرے کہ رسپانس ٹائم کتنا دینا ہے، لیکن یہاں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ رسپانس ٹائم ڈیٹ آف پبلیکیشن سے سٹارٹ ہوگی اور نیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے لیے کم سے کم 15 ڈیز اور انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے لیے کم سے کم 30 ڈیز کا رسپانس ٹائم دینا لازم ہے، اور تمام جتنی بھی پروکیورمنٹ کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹس ہیں یا نوٹسز ہیں that shall expressly mention the response time allowed for that particular procurement along with the information for collection of bid documents, which shall be issued till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bid by the closing date. یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں no time limit shall be applicable in case of emergency. اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ پروکیورمنٹ ایمرجنسی کی صورت میں کی جا رہی ہے تو اس میں یہ ٹائم لمٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ رول نمبر 13(2) میں رسپانس ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ٹائم شیل بی کیلکولیٹڈ فرام دی ڈیٹ آف فرسٹ پبلیکیشن آف دی ایڈورٹیزمنٹ ان اے نیوز پیپر اور پوسٹنگ آن دی ویب سائٹ ایز دا کیس میں بی۔ اگر 30 ملین روپیز تک کی پروکیورمنٹ ہے تو رسپانس ٹائم ویب سائٹ PPRA کی ویب سائٹ پہ اپیئرنس کے ساتھ شروع ہو جائے گی، اور اگر 30 لاکھ روپیز یعنی 3 ملین روپیز سے زیادہ کی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا پرنٹ میڈیا میں بھی پبلش ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر پرنٹ میڈیا میں یعنی کسی بھی نیوز پیپر میں پبلیکیشن کے ساتھ اس کا رسپانس ٹائم کیلکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پروکیورمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے رول نمبر 14 میں کچھ ایکسیپشنز دیے گئے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی پروکیورمنٹ جس کو ایڈورٹائز کرنا نیشنل سیکیورٹی کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں تو وہاں پر اس کو ایڈورٹائز نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے with the prior approval of authority. نیکسٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے تو وہاں پر بھی پرائر اپروول آف دی اتھارٹی اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر ہی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پری کوالیفیکیشن، کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف سپلائرز اینڈ کانٹریکٹرز کے بارے میں ہوگی۔